Yes, a very good evening to all of you. Shall we start our program? Yes. We will start our session with Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Again, a warm welcome to all of you. Under the guidance of our worthy principal ma'am, Mrs. Anju Gambhir, an online orientation program is organized for parents of KG class from DAV Police Public School, Kaithal. Yes. A very good evening to all respected parents. I, Garima, on behalf of DAV Police Public School, heartily welcomes all you in this very special orientation program. Many schools organize orientation program for parents of children who are about to join primary schools. Such orientation programs are fantastic opportunities for parents to know what to expect in coming and also equip themselves for it. In this orientation program, I will explain the pattern for conducting worksheets, extracurricular activities, the support required from parents. A parent is a teacher at home and a teacher is a parent at school. And the child is center of our universe. By the way, children needs parents all the time. But there is a great need in this pandemic period. If you help your ward, the academic graph of your ward will definitely go up. If you want to give a good future to your child, then you have to participate in his or her each and every activities. As I already have told you, every school has different study patterns. Our school also has unique quality. We are trying to nurture our flowers so that they can blossom and spread their fragrance in the whole society. In this time, parents are being role model. In this time, parents are being role model and child will surely copy you. Once again, I am repeating, in this period, parents are being role model and child will surely copy you. If you want to teach them value education, first you wish the child yourself, then expect from your ward. If you want to teach value education to your child, now there is a need of this time. First you wish the child yourself, then expect from your ward. Here are some tips for you parents. Keep patience in front of child. Share your personal experience with them. Speak positively about school. Once again, I am repeating, always speak positively about school in front of your ward. Give them emotional support. Give quality time to your ward. Be a good friend of your child. Set up their daily routines. And the most important thing, listen to the child. Give your child the respect if you want them to give you. मैं कुछ मैजिकल वर्ड्स बताने जा रही हूँ जो आप रूटीन में यूज करते रहेंगे. Definitely you will see that graph of your words, internal growth, external growth will go up. Always use these magical words with your words. I love you always. I am so proud of you. You are so special. You can do this. I believe in you. I am so grateful for you. Positive parenting describes a set of parental behaviors that boost a child's capacity to love, trust, explore, and learn. Once again, welcome to all.
Welcome to Parents Orientation Program. Good parents provide moral and spiritual guidance, set limits, and provide consequences for a child's behavior. Once again, I want to tell you, if you want to teach them value education, first you wish your child, then expect it from your child. Yes. We have planned aim of this orientation program, let the parents know about curriculum. बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज रहती हैं करिकुलम के रिगार्डिंग, अब हम वो डिस्कस करना चाहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्कूल, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, असेसमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, हाउ वी टीच योर वर्ड्स, असेसमेंट, हाउ वी असेस योर वर्ड्स, रूल्स फॉर स्कूल डिसिप्लिन, बी ऑनेस्ट, show respect for parents, adults and others, as their word is at home, show respect for teacher also. Be prepared for school and all activities. Allow others to work undisturbed in classroom. Follow directions and instructions given by teacher. Yes, but now a question arises, what is a curriculum? Curriculum refers to lesson and the academic content taught in school or in specific course or program. It may also be defined as instructional and educative program by which students achieve their goals, ideals and aspiration of life. Curriculum represent the total life of school, in which child is center factor. The traditional curriculum, पहले टाइम में curriculum कैसे हुआ करता था? Subject centered, bookworm, books पढ़ो. But traditional curriculum was subject centered, while the modern curriculum is child and life centered. First of all, we make annual planner for upcoming session with activities. Now, what we include in our annual planner? In our annual planner, we include language skills, cognitive skills, physical and social development. Firstly, I want to describe language skills. In language skills, we include Hindi and English both. For this, we have 4 skills: listening, speaking, reading, writing. Speaking and listening skills always develop together. Many activities that teacher, but now at that time parents also can plan for improving their teaching and listening and speaking skills, like group discussion. You can talk with your word, story dramatization. You can motivate your word to dramatize a story. You also can sing rhymes. In online classes, I also watched that parents are also reciting rhymes. Teacher talk. Now, reading. Reading is not ability to recognize the alphabet. Reading सिर्फ word को पढ़ना नहीं होता. Reading is the ability to get the meaning of that word. उस word को meaning देना होता है. For this, we can use activities. Reading of 3-letter words. As students are at home now, you can tag object for sight reading. For example, you can tag on door, clock, wall, almirah, etc. I know once child will decode these letters, but surely once he or she will decode, next time he or she will read surely. Yes. Next skill is, and the last skill is writing. Writing is the ability to communicate or record thought on paper in a meaningful way. Writing is the ability to communicate or record thought on paper in a meaningful way. For these, we can use activities like matching, word building, jumbled words. इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आप अपने बच्चे के साथ कहीं पर भी घूमने जाते हैं, आई नो अब आप पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को भी लिखना नहीं आता, बट हम कहीं पर भी अगर घूमने गए, हम आके सिर्फ अपने बच्चे को इतना कह सकते हैं कि आपने जो देखा उसे हल्का सा ड्रॉ कर दो. वो भी राइटिंग सेक्शन में आएगा कि बच्चा जो भी बच्चे ने फेस किया या बच्चे ने मार्केट में भी गए, उसने एक मैंगो देखा, वो आके मैंगो ड्रॉ कर दे, वो भी बच्चे की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है. कॉग्निटिव स्किल्स. नाउ नेक्स्ट इज cognitive skills. Cognitive means intellectual development. Cognitive development refers to all the process that take place in child's brain.
In this, we include maths, environmental concept, thinking skills. Maths. Maths, it includes basic concept, shapes, colors, and concept of weight, heavy and light. Number concept. Verbal counting up to 0 to 50. Addition and subtraction. 0 to 20 without carry. In this picture, you also can see that students are doing addition by using objects. Now next is environmental concepts. It introduced children to the natural world. It introduced children to the natural world. To understand science, children needs to be curious about, to ask how and why. हमें बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करनी चाहिए कि वो साइंस के बारे में, जिस नेचुरल वर्ल्ड में वो रहते हैं, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सके. In this we include activities are helpers, sense of organs, sources of water, animal and birds, transports, etc. Now, thinking skills. Basically, it is a mental skills that constructive play, puzzles, memory game, etc. Thinking skill. बच्चा अपने माइंड से सोचे. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, स्टूडेंट्स आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेकिंग विद क्ले. बच्चों ने जो ऑब्जेक्ट्स यूज कर रखे हैं वो क्ले के साथ बना रखे हैं. बच्चा अपने विश से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है. दे कैन डू एनी कंस्ट्रक्शन, मेमोरी गेम एक्सेट्रा. क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव आर्ट. Art and craft. Art and craft not only means to draw something. Art and craft means they can do dramatization. They can create by themselves anything. In this picture, we can see that students are making hut. This is a part of art and craft. Music, dance, drama. Music, dance, drama does not mean only that students will dance. No, it means students will do role play. They can do role play of anything. In this picture, we can see that students are playing role of mango, fruits. Now, physical development, social and emotional growth. Physical development. The main goal here is to help the growth and the development of children's body. The main goal here is to help the growth and development of children's bodies. The school provides a safe environment that protects children from injury and disease. Here you can see that. Yes, here you can see that physical development activities. In this we include free movements, movable materials. We can use tiles so that child can move them. Ball activity, rhythmic activities, group games, meditations. Now next is social and emotional growth. Social and emotional development is an extremely important part of preparation for primary schools. Children need to be able to get along with others and feel self-confident in others to be successful in primary schools. It also includes their ability to understand, to express and deal with their feelings in a positive manner. In this way, we can say that social and emotional growth is very, very important in primary stage. Now, next is value education. Now, value education. India has a great culture, heritage, and it is a land from where place, love, non-violence have been taught to the world. For value education, we use Gayatri Mantra, DAV anthem. Students will recite national anthem respectfully. Know the importance of festivals like Baisakhi, Independence Day, Raksha Bandhan. They will show basic values like honesty, truthfulness, respect, feelings, and property of others. Respect elders. Yes. After doing these activities, अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हम पूरा साल बच्चे को ये एक्टिविटीज करवाते हैं. अब उसके बाद जो पेरेंट्स के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, नाउ अ क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी evaluate the child. But I want to tell you, in our school, in our fabulous school, we don't assess the child with numbers. We don't assess our children on basis of marks because these children are too young. From nursery to second, we don't assess the child
on behalf of marks. Even research also shown that tests are not at all accurate while measuring children's abilities. अब जैसे कि आप सबने सारी एक्टिविटीज देखा, ना तो हम इन सब एक्टिविटीज को मार्क्स दे सकते हैं और ना ही हम आपके बच्चों को मार्क्स के बिहाफ पर असेस कर सकते हैं. We observe or evaluate them on basis of checklist. Now, what is checklist? Checklist is an assessment tool that set out specific criteria which teachers use to know the development or program of a child. Yes, here you can see picture of checklist. I have already told you about 4 skills: listening, speaking, reading and writing. Now, you can see how we assess your word. Your word listen attentively in class. बच्चों को सुनने के लिए भी 2 चाहिए. अब जैसे बच्चा टीचर को सुन रहा है कि नहीं, उसके बिहाफ पे असेस करना. क्या बच्चा जब ग्रुप में बात कर रहा है तब बच्चा सबकी बातें सुन रहा है, उसके बिहाफ पर असेस करना. अगर आप वर्ड ऐसा करता है, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो हम उसके लिए टी को यूज करते हैं. और अगर दोनों के साथ बच्चा ऐसा यूज करता है तो हम इसके ऊपर ए लिखने का मतलब ये होता है कि ऑलवेज, कि बच्चा ऑलवेज हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, अपने टीचर को केयरफुली सुनता है, जब भी ग्रुप में डिस्कशन होती है उन्हें भी केयरफुली सुनता है. डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द इनिशियल साउंड एंड द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड. अगर कोई वर्ड बोला जाता है तो बच्चा उसकी इनिशियल साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाता है, इसके लिए अलग से असेसमेंट है, और लास्ट साउंड को असेस कर पाता है, साउंड को समझ पाता है या नहीं, इसके लिए अलग से असेसमेंट है. इस तरह से आप देख सकते हो स्पीकिंग स्किल्स में भी. यूज ऑफ गुड मॉर्निंग. क्या बच्चा ये वाले वर्ड्स यूज करता है? यूज ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू. अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो हम उसके ऊपर टिक यूज करते हैं. और अगर कोई बच्चा नहीं करता, here you can see that I put a small dot here. Yes, dot while making phrases. अगर कोई बच्चा जब हम बच्चों को वर्ड्स बनाना सिखा देते हैं, ये नहीं है कि अगर हमारे पास ये मार्क्स ना देने का हक है और हमें ये असेस करना है, हमें ये राइट नहीं है कि हम हर बच्चे का टिक कर दें. नो, पेरेंट्स वी पुट डॉट व्हेन अगर बच्चा वो चीज नहीं करता और अगर वो बच्चा हमारे कहने से वो चीज करता है तो भी हम उसे डॉट में रखते हैं. 4 बिहाफ हम करते हैं. क्राइटेरिया होता है हमारा ऑलवेज, कि बच्चा हमेशा करता है वो चीज. यूजुअली बच्चा खुद से नहीं करता, हम अगर बच्चे की हेल्प करते हैं तो वो बच्चा तब करता है. समटाइम्स बच्चे को बार बार कह के हम वो चीज करवाते हैं कि फिर भी जब बच्चे का मूड होता है बच्चा कर देता है, और अगर नहीं करना चाहता या उसे नहीं आ रहा तो वो नहीं करता. तब हम उसे समटाइम्स में करते हैं. और एनए जो हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है. अगर वो लिसनिंग स्किल्स में नहीं है तो उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, अगर उसकी रीडिंग नहीं अच्छी तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होगा. हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसके बिहाफ पर हम उसे असेस करते हैं. नाउ हियर यू कैन सी रीडिंग स्किल्स. रीड्स ओन नेम. अगर बच्चे अपना नेम पढ़ पाते हैं, इसके लिए भी 2 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं. मार्क्स का क्राइटेरिया कंपैरेटिवली इजी होता है कि बच्चे ने अगर नहीं किया, हम पेरेंट्स को शो कर सके कि देखिए आपके बच्चे ने ये चीज नहीं की और हम मार्क्स ना कट कर लें उसके. बट नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू असेस योर वर्ड्स. वी हैव टू असेस रीड्स ओन नेम. हमने बच्चे को नेम पढ़ने के लिए दिया, अगर वो बच्चा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में पढ़ लेता है देन वी विल पुट ठीक. बट अगर बच्चा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं पढ़ सकता तो हम उसे वहां पर डॉट लगाते हैं. उसके लिए हम सेकंड ऑब्जर्वेशन भी करते हैं. हम बार बार उस बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जब तक वो बच्चा पढ़ना नहीं सीख जाता. राइटिंग स्किल्स writes own name, join and writes neatly and legibly, like observation 1 and observation 2. In this you can see that a child is not able to write neatly and legibly in first observation. जब फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्वेशन की डेट रखी, वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, इन ऑब्जर्वेशन की पर्टिकुलर डेट्स भी गिवन होती है हमें. हम एक पर्टिकुलर डेट पर ही ये चीज ऑब्जर्व करते हैं. अगर वो बच्चे ने फर्स्ट टाइम में वो चीज नहीं कर पाया, हमने उस बच्चे के लिए डॉट पुट कर देते हैं. हम वेट करते हैं, दोबारा उस बच्चे को प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए,
और तब तक वो अपनी करते रहते हैं कि जब तक बच्चा अच्छे से इम्प्रूव ना कर ले, और फिर बच्चे को सेकेंड ऑब्जर्वेशन बच्चे के साथ करते हैं हम अपनी. Yes. Like this English, and now we will talk about Hindi. In Hindi, speaking skills are while answering questions, Bal Madhuri books are given. In Hindi, writing skills, Vyanjan ka se ha, swar a se hai, writes neatly and legibly. In maths, basic concepts, flat shapes. In this we assess 3 times: April to August, September to December, January to March. 3 सेशंस में हम बच्चों को करते हैं असेस, और उन सबको अपनी चेकलिस्ट को फिल करने के बाद हम अपना तैयार करते हैं रिपोर्ट कार्ड. अब हम रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं? रिपोर्ट कार्ड के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है. यू कैन सी हियर, इट्स द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अप्रैल टू अगस्त. अप्रैल टू अगस्त. This time we gave each report card. I am showing you. This is the report card of Aditya Moore. Yes, listening skills. Listen attentively in class. We will put tick in always. Here are 4 columns. Already I described always, usually, sometimes needs attention. Once again, I want to tell you always. If you are bad, do the same thing again and again. अगर वो अच्छे से कर पाता है तो हम उसे always में टिक करते हैं. यूजुअली बच्चा समटाइम्स वो चीज करता है और समटाइम्स वो चीज नहीं करता, या किसी की गाइडेंस के अंदर करता है तो यूजुअली में टिक करते हैं. समटाइम्स जब बच्चा बहुत कह दिया जाता है कि बच्चे को प्रेशराइज करके कि बेटा ये वाला वर्क करना है, तो समटाइम्स में वो नीड अटेंशन. अगर वो बार बार हमारा प्रयास करने के बाद, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो बच्चा नहीं कर पाता, तो नीड अटेंशन में टिक की जाती है. समटाइम्स पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं टीचर ने क्या रिपोर्ट कार्ड दे दिया, इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, बट इसमें हर चीज क्लियर है. यू कैन सी हियर लैंग्वेज डेवलपमेंट. फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश. In English, listening skill. Already I have told you here are 4 skills in Hindi and English both. Firstly, I will talk about 4 skills of English: listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill. In listening skill, we include listen attentively in class, discriminates between initial and last sound of words, differentiate between words and vowels. Checklist. Here you can see that we have to write the name of your word. Then we start assessing your word. After completing our checklist, we will work on report card. Yes. Now, this is the report card of September to December. Differentiates about in English language skills, discriminates between the words vowel I, O, U. Listen and understand simple English. Speaking skills, uses simple greetings and common courtesies. Like this, we judge your child. Not exactly judge, but we assess your words. Discriminates between the initial and last sound of words, identifies rhyming words, listen with understanding. Now, January to March. Listening, same criteria. Firstly, we will conclude English. In English, we conclude language. In listening skills, speaking skill, reading skill, writing skills. Then Hindi, listening skill, speaking skill, reading skill, writing skills. Cognitive development. In this, we includes maths, environmental studies, thinking skills. In maths, we include basic concepts and number concepts, environmental concepts. In this time, we include about the living and non-living things, seasons, lights, creative and expressive art, art and craft, draw and paints confidently with a variety of drawing tools, draw imaginatively on a theme, maintains a file, music, dance, drama. I already told you music, dance, drama is not just reciting rhymes, no. Sing simple songs and rhymes in a tune, participation actively in musical activities, acts out the allotted role imaginatively, physical development. For physical development, plays indoor, outdoor games,
shows team spirit, performs simple exercise, shows leadership qualities, personal habit and hygiene, keep himself herself neat and tidy. बच्चा जो भी यूज कर रहा है कि अपने आप को नीट क्लीन रख पाता है या नहीं रख पाता, ड्रेसेस नीटली, उन सबको भी असेस किया जाता है कि जब बच्चा बैठता है, क्या बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है कि वो साफ है या नहीं है, क्या बच्चे ने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने, ड्रेसेस नीटली, यूजेस हैंडकरचीफ और नैपकिन। आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, देखिए इनके बिहाफ पर भी आपका वार्ड असेस होता है कि बच्चा नैपकिन हैंडकरचीफ यूज करता है या नहीं करता। शोज हेल्दी टेबल मैनर्स, कॉग्निटिव, yes, here is nutrition also. We assess your ward on behalf of nutrition also. Brings nutritious food, identifies and understand importance of food, finishes his or her food in time, eats with an appetite. Yes. Thank you so much for giving me your precious time. If you have any query, you can raise your hand or you can ask me through chat box. Thank you so much for giving me your precious time.